Assalamu alaikum class. This is your fifth online lecture of numerical competition, and in this lecture we will start a new topic, numerical solution of differential equations. Students, if you people remember, in lecture 3 and 4, in third and fourth online lecture of numerical competition, we solved integration. Okay, and the topic was in numerical integration. Similarly, now we are solving differential equations. So we have to find numerical solution of differential equations. Again, we will have approximate answers of approximate solution of these any differential equation. So okay, students, so how we will solve differential equation, how we will have numerical solution of differential equations. For this we have Euler's method for initial value problems. Okay students, कौन सा मेथड हम अप्लाई कर रहे हैं टू फाइंड द न्यूमेरिकल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस? इट इज यूलर्स मेथड. ओके, नाउ कंसीडर अ डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx minus y is equal to x with the initial condition y of 0, with an initial condition y of 0 is equal to 0. इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम क्या है हमारे पास? व्हेन x is equal to 0 or y is also 0. This is the initial condition which is given in the question, or we have the first order differential equation dy by dx minus y is equal to x. Okay, and we need to find the numerical solution of this differential equation. By how we will find the numerical solution of this differential equation? We will use Euler's method. And what is Euler's method? Let me solve a question. Let me solve the question, and you people will come to know that how we can solve any question, any differential equation by Euler's method. Okay student, we have a question. The question is using Euler's first order method. Okay student, remember Euler's method is the first order method, and there is also second order method, that is Runge-Kutta method. Okay, we will discuss in later lectures. So the question is using Euler's first order method with a step size of 0.1. The value of y at 0.3 is question mark. हमें given क्या है? हमसे कहा गया है you need to apply the method which is Euler's first order method and which has the step size of 0.1, and the value of y at x.3 is we need to find this value. हमें क्या करना है? y फाइंड करना है at x is equal to 0.3. 4 ऑप्शंस हमारे पास गिवन है. अगर ऑप्शंस ना भी गिवन होते तो हम जैसे सॉल्व करेंगे वैसे ही करते, लेकिन अब क्या है कि हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा बस हम यहाँ से कंफर्म कर सकते हैं वेदर इट इज़ 0.01, 0.031, 0.0631 और 0.1. Okay, so we have to apply Euler's first order method. We have given step size of 0.1 and we need to find value of y at x is equal to 0.3. We need to find this value, and we also have given a differential equation of first order dy by dx minus y is equal to x, and the initial condition y at 0 is equal to 0 means when x is equal to 0 y is also 0. This was the data which has been given to us. Now let's solve the question by Euler's first order method. Okay students, see, we have given the differential equation dy by dx minus y is equal to x and y at 0 is equal to, okay स्टूडेंट्स कंफर्म. हम सोल्यूशन अभी मैं सॉल्व करूँगी, देख लेंगे वेदर इट इज़ 0, क्योंकि क्वेश्चन में शायद 0 था, यहाँ मैंने 1 लिखा हुआ है, तो हो सकता है मैंने वहाँ पे गलत लिख दिया हो या यहाँ पे गलत लिख दिया हो. ठीक है, लेकिन हमें पता है y एट 0 इज इक्वल टू समथिंग का मतलब यह है कि ये हमारा x नॉट है इनिशियल, और x नॉट पे जो y की वैल्यू है दैट इज़ y नॉट. ओके, दिस वॉज ऑल्सो गिवन. मैथड यूलर्स फर्स्ट ऑर्डर मैथड, स्टेप साइज हमें h इज इक्वल टू 0.1 गिवन है, और y एट x इज इक्वल टू 0.3 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. वी नीड टू फाइंड दिस सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन. Okay students, whatever the differential equation is given to us, that dy by dx is our f of x y. Okay, that differential equation is, हम dy by dx को एक साइड पे ले जाएंगे, जो भी बाकी पार्ट बचता है that is our function that is consist of x and y, and this is equal to x plus y from our given question.
ओके, dy बाई डी एक्स को हम एफ ऑफ एक्स वाई कह देंगे कि ये हमारा y का फंक्शन है। ओके, एक्स नॉट हमें गिवन है, लेट मी शो यू पीपल अगेन। एक्स नॉट हमें गिवन है स्टूडेंट्स, एक्स नॉट हमें गिवन है 0 और वाई नॉट, ओके स्टूडेंट, ये वाई नॉट इज इक्वल टू 1 है, ठीक है, वहाँ पे क्वेश्चन में ठीक कर लीजिएगा। और स्टेप साइज हमें h इज इक्वल टू 0.1 गिवन है एंड एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ये हमने डिफरेंशियल इक्वेशन से एक्सट्रैक्ट किया है। ओके, नाउ Euler's method, what is actually the Euler's method, how we apply this method and how we find the solution। y1 is equal to y naught plus h f of x naught comma y naught। ओके, ये हमने जेनेरिक इक्वेशन नहीं लिखी, नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको जेनेरिक फॉर्मूला लिख के दिखाऊंगी, फिर आपको ज़्यादा अच्छा आइडिया होगा कि हाउ वी अप्लाई दिस Euler's मेथड एंड व्हाट इट इज कंसिस्ट ऑफ। सो दिस इज y1, द नेक्स्ट y इज इक्वल टू लास्ट y, ओके, ओल्ड वन प्लस h स्टेप साइज एंड f of x naught comma y naught। So what we need to find, we need to calculate y at different x। okay, now make a table, we have x हमारे पास देखें 0, 0.1, 0.2, 0.3। अब देखें, आप पूछ सकते हैं मैडम ये आपने 0, 0.1, 0.2, 0.3 क्यों लिया है? क्योंकि हमारा इनिशियल x 0 गिवन है, x नॉट इज 0, ठीक है। हमने जाना कहाँ तक है? वहाँ तक जहाँ पे हमें y जिस x पे हमें फाइंड करना है। आपको पता है हमें कहा था y एट 0.3 फाइंड करें, तो हम 0.3 तक गए हैं। और किस स्टेप साइज के साथ? क्योंकि स्टेप साइज h की वैल्यू 0.1 गिवन है, तो हम 0 से 0.1, 0.1 से 0.2 एंड 0.2 से 0.3 तक आ गए हैं, ठीक है। अब इनके कॉरेस्पॉन्डिंग चेक करें, जब x 0 था तो इनिशियली y 0 गिवन था। सॉरी स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर गलत कह चुकी हूँ, एक दफ़ा आप देख लें, ये y 0 इज इक्वल टू 1 नहीं 0 ही है। एक यहाँ पे आप करेक्ट करेंगे इसको, और दूसरा यहाँ भी कहीं ऊपर क्वेश्चन में भी लिखा होगा शायद, यहाँ पे इसको भी आप 0 कर देंगे, ठीक है। दिस इज नॉट 1, दिस इज 0। ओके, हम क्या करें, हम डिफरेंट x पे अपने y को कैलकुलेट करें। x 0 था गिवन, तो y 0 हमें गिवन था, ठीक है। ओके, ये है एक्चुअली हमारे पास Euler's फर्स्ट ऑर्डर मेथड का फॉर्मूला, y न्यू इज इक्वल टू y ओल्ड प्लस h f ऑफ x ओल्ड कॉमा y ओल्ड। मतलब वो फंक्शन जो जिसमें x की प्रीवियस वैल्यू है, y की भी प्रीवियस वैल्यू है, ये y भी प्रीवियस है, h हमारे पास स्टेप साइज है, तो हमारे पास नेक्स्ट y आ जाएगा। सो y1 इज इक्वल टू y1 है, तो यहाँ पे y 0 होगा, y 0 हमारे पास 0 है, प्लस स्टेप साइज h हमारे पास 0.1 है, और f ऑफ x हमारे पास क्या है, फंक्शन हमारे पास क्या था, फंक्शन है एक्चुअली हमारे पास x प्लस वाई, तो x 0 भी हमारे पास 0 है, y 0 भी हमारे पास 0 है, ठीक है। सो ये एक्चुअली फंक्शन की वैल्यू हमने लिखी है विच वॉज x प्लस वाई, और ये फंक्शन की वैल्यू कहाँ से लिखी है स्टूडेंट्स, मैंने ये वाली, ठीक है, f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। सो f ऑफ एक्स 0 कॉमा वाई 0 इज इक्वल टू हो जाएगा x 0 प्लस वाई 0, f ऑफ x2 कॉमा वाई 2 हो जाएगा x2 प्लस वाई 2, ठीक है। तो इस फंक्शन में हम वैल्यू पुट कर रहे हैं। सो इस तरह से हमने, ओके, फिर हमने x लिया 0.1, ठीक है, उस पे हम अपना y क्या देख रहे हैं, x को जब 0.1 लिया तो हमारा नेक्स्ट y1, ये जो हम कैलकुलेट कर चुके हैं ऑलरेडी 0, ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब हमारा y2 क्या हो जाएगा, y1 विच इज 0 प्लस 0.1 स्टेप साइज इंटू f ऑफ x1 कॉमा y1, तो x1 की वैल्यू हमारी 0.1 है और y1 की वैल्यू हमारे पास 0 है। सो टोटल सॉल्व करेंगे तो दैट इज 0.01। ओके, नेक्स्ट 0x 0.2, y हमारे पास कौन सा है, x2 के कॉरेस्पॉन्डिंग y2 होगा विच इज ऑलरेडी कैलकुलेटेड, सो दिस 0.01 विल बी हियर। सो y3 इज इक्वल टू y2 विच इज दिस वन प्लस h already given and f of xy which was x plus y, so x is 2.2 here and plus y is 0.01, so this is equal to 0.031. again next x is 0.3 जिस पे हमें कैलकुलेट करना है, उस पे हमारा y 0.031 ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, so you don't need to find y4 here because we already have calculated y at x is equal to 0.3. ओके, ये एरो के निशान
क्वेश्चन में आपने लगाने नहीं है, लेकिन ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए लगाया है कि जब x ये था तो y ये था, x ये था तो y ये था। सो व्हेन x इज इक्वल टू 0.3 जो जिस पे हमें y फाइंड करना था, तो हमारा y आता है 0.031। तो वो जो 4 ऑप्शन MCQs गिवन थे उसमें शायद बी पार्ट हमारे पास था 0.031, विच इज़ द करेक्ट आंसर। Okay student, this was how we can we can find the numerical solution of differential equation and by first order method, which was Euler's method. Now let's solve another example. Okay students, this is another equation, sorry, this is another question, and it is also solved by Euler's method, but a little bit changed. Same method, we will solve the same way but little change in naming. Okay, the question is solved by Euler's method the following differential equation for x is equal to 0.8 taking h is equal to 0.2. okay, हमें क्या करना है, यूलर्स मेथड के थ्रू डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है किस x पे, व्हेन x इज इक्वल टू 0.8. ओके, और टेकिंग h इज इक्वल टू 0.2 मीन्स दिस इज द स्टेप साइज विच इज गिवन, and the differential equation is dy by dx is equal to x square plus y. This is the differential equation and we know okay, initial condition हमें given है y is equal to 0 when x is equal to 0 means y at 0 is equal to 0. This is the initial condition which is given, and this is the differential equation which is given. This is the x value at which we need to solve the equation, and we have given the step size h is equal to 0.2. Now as we know, we always put this differential equation as f of x y. H is equal to 0.2, step size given, y at 0 is equal to 0 means x is equal to 0 when y is equal to 0, sorry, when x is equal to 0 implies y is equal to 0. Now we will use the formula of Euler's first order method, which is yn is equal to yn minus 1 plus h f of x n minus 1 comma yn minus 1. If you remember, in the first example of this topic, I asked you people that in the second question I will show you the generic formula of Euler's method, which is this one. Okay, last one I used the terms y new, y old, so actually it is yn is equal to yn minus 1 plus h into f of x n minus 1 comma yn minus 1. Now take initial, okay, we have given when x is equal to 0 y is equal to 0, so this is x 0, this is y 0. when x is equal to 1, sorry, स्टेप साइज हमें क्या गिवन है 0.2, सो स्टेप साइज नेक्स्ट वैल्यू हमारी आ जाएगी 0.2, उसके नेक्स्ट आ जाएगी 0.4, उसके नेक्स्ट स्टेप साइज हमारी वैल्यू आ जाएगी 0.6, उसके नेक्स्ट आ जाएगी 0.8. हम 0.0 से शुरू क्यों हुए और 0.8 पे ख़त्म क्यों हुआ, क्योंकि इनिशियली वी वर गिवन द इनिशियल कंडीशन एट x इज इक्वल टू 0, सो दिस वाज गिवन. और हमें कहाँ तक फाइंड करना है, अपने फंक्शन सॉल्व करना है डिफरेंशियल इक्वेशन को, या किस x पे फाइंड करना है, दैट वाज 0.8. Okay, so when it is x1 we have to find y of 1, when it is x2 we need to find y of 2, when it is x3 we need to find y of 3, and when it is x4 means 0.8 it will be y of 4, or that is y of 0.8, which we need to find, or which we were asked to solve that differential equation given, which is given for y at 0.8. Now what we will do, we will find this value y of 1, y of 2, y of 3. Now using the formula which was yn is equal to yn minus 1 plus h f of x n minus 1 comma y of n minus 1. So y of 1 is equal to y0 plus h f of x naught comma y naught. So y naught we are given this is 0, h step size is 0.2, function at x naught comma y naught, x naught हमारा 0 है, वाई नॉट भी 0 है. इस क्वेश्चन में एक्चुअली स्टूडेंट मैंने थोड़ा सा ज़्यादा सिंप्लीफाई करके लिखा है, लास्ट में पिछले वाले में इतनी सिंप्लीफिकेशन नहीं थी. सो फंक्शन हमारा 0 0 पे क्या हो जाएगा, आपको पता है फंक्शन हमारा था एक्स स्क्वायर प्लस वाई. ठीक है, कहाँ पे है ये फंक्शन, आई विल शो यू पीपल अगेन. दिस इज फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई. ठीक है, सो जब आप इसको वैल्यूज़ के लिए पुट करेंगे, दिस इज 0 स्क्वायर प्लस 0 x square plus y, so the total answer is 0. Similarly we will calculate y2
y3 and y4, and we will stop here because we need to find y4. This is not x value, this is actually x4, which is 0.8. okay students, so we are here and 0.1219 is the answer. Now please you people, after learning from this lecture, solve some other examples of the relevant topic. Thank you class.